and we will go for that. Okay, so neuroimaging in psychiatry. In past, people were covering CT scan, MRI, SPECT, and PET scans in neuroimaging. Now the trend has changed. With emerging data, the CT scan is removed from the neuroimaging in psychiatry because it gives us no clue related to the psychiatric morbidity, except that if there is some structural damage in the brain, then it can be highlighted. So I will definitely touch the CT scan briefly, but I will not focus on CT scan. More important is the MRI, the SPECT scan and the PET scan, and plus EEG and MEG. Now, magnetic encephalogram and EEG are important topics. Those won't be covered here because they are separate and big topics. How to read an EEG, और एग्जाम में अगर EEG की ट्रेसिंग पढ़ी हो तो how you have to respond to it. So that's a separate topic. But I will definitely try to cover up the first three important topics, the CT scan, the MRI, and the SPECT and the PET, and we'll try to see what can be done about it. Okay, so I hope you can see the slide. So if you go into any of these sites where the CT scan machine is placed, you will see something like this. There is a white colored round tunnel like thing, and there is a table beneath it where the patient lies down, and there are certain structures over it. Basic principle of the CT scan machine is the same as that of an X-ray, right? So the patient is placed on the CT table in a supine position, and the tube rotates around the patient in a gantry. ये जो गोल सी मशीन आपको नजर आती है, एक्चुअली इसके अंदर एक्सरे ट्यूब है. वो एक्सरे ट्यूब एक तरफ से दूसरी तरफ रोटेट करती है और फिर वापस आती है. When I say the X-ray tube rotates, actually this is how the procedure is conducted. What does CT scan stand for? It stands for computerized tomogram, tomographic image. Tomogram is the cut section. So जब हम कट सेक्शन की बात करते हैं तो एक्सरे जब हम लेते हैं, चेस्ट एक्सरे अगर हम जाएं और लें तो आगे ट्यूब होती है, पीछे फिल्म लगी होती है, यहाँ से एक्सरे रेडिएशंस पास करती हैं और पीछे फिल्म के ऊपर इमेज आ जाता है. The same techniques apply here as well. So the tube put the radiation, there is a background film. So ये जो गोल मशीन है इसके अंदर एक तरफ ट्यूब है और दूसरी तरफ डिटेक्टर है. सो वो ऐसे दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते हैं. यहाँ से रेडिएशन निकलती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइड पे जाती है और इस तरह. सो एक ऐसे गोल इमेज घूमता है और वो जो रेडिएशन जाके इमेज उस डिटेक्टर के ऊपर बना रही है, वो इमेज सारे कंप्यूटर पिकअप करता है और उसके बेसिस पे हमें फिल्म मिल जाती है एक कट सेक्शन की. सो मैं यहाँ पे सीटी स्कैन की मशीन अगर सपोजली यहाँ का सेक्शन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसको फोकस करूँगा, जस्ट लाइक कैमरा, कि आप डेप्थ में जो चीज़ होती है, कुछ चीज़ें सामने होती हैं, कुछ चीज़ें बैक पे होती हैं, लेकिन आप जिस चीज़ को फोकस करना हो आप सिर्फ उसके चेहरे या उस चीज़ के ऊपर रख के कैमरे का फोकस करते हैं. सो लेंस का डायरेक्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाता है. सो सीटी स्कैन में वही टेक्निक है कि मुझे अगर सपोजिटली सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब पे फोकस करना है तो वो ट्यूब जो है वो टेम्पोरल लोब पे फोकस करेगी, डिटेक्टर पीछे से करेगा, ट्यूब मूव करेगी और टेम्पोरल लोब के उस इलाके में हर तरफ से उसकी फिल्म खिंच जाएगी और उस फिल्म को फिर कंप्यूटर मर्ज करके मुझे ये इमेज दे देगा. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल that takes place in a CT scan. I hope you are able to understand. So these are the tomographic sections of the CT scan head, CT head. और इस tomographic section में जो है वो आपको फिर वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं इमेज के तौर पे. सॉरी, ओके, मैं इसको वापस ले आऊँ. ओके, सो
इसमें again you have to understand that this whole machine is working on the principle of the X-rays. The only problem is that when we talk about this X-ray, CT scan, the computerized tomogram, there is some problems with it as well because it's an X-ray. So it gives you the image on the same principles as the X-ray. The air comes black and the dense material जिसके थ्रू रेडिएशन पास नहीं करती वो वाइट आता है. सो तमाम एरियाज ब्रेन के इस कैविटी के अंदर जहाँ पे बोन है वो वाइट हो गया, जहाँ पे एयर है वो ब्लैक हो गई, और ब्लैक एंड वाइट के कंट्रास्ट में डेंस से जो चीज़ें हैं वो डार्कर ग्रे होंगी और जो लाइट चीज़ें हैं सॉरी डेंस जो चीज़ें हैं वो वाइटिश ग्रे होंगी, और जितनी वो लेस डेंस होंगी जैसे CSF है वो उतने डार्क होते चले जाएंगे. सो जहाँ काला निशान हो वो हवा है और जहाँ सफ़ेद हो वहाँ बोन है, and in between that you can get all the things. So CT scans use a series of X-ray beams pass through the head. The images are developed on the sensitive film. This method creates cross-sectional images of the brain and shows the structure of the brain and not its functioning. The most important part is that when you get a CT scan in the exam situation and the examiner asks you, what is this? So the first and foremost thing you have to, इसमें नहीं है तस्वीर में, बट जितनी भी CT स्कैन की फिल्में जो कमर्शियली होती हैं मरीजों के ऊपर, उनके ऊपर तरतीब से कुछ चीज़ें लिखी होती हैं. एक जिसके ऊपर लिखा होगा दिस इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राम और CT स्कैन ऑफ मिस्टर फला फला फला, एज दिस मच, सेक्स ये, एड्रेस ये, ID ये, प्लस वो बताएंगे कि ये ब्रेन का है, और फिर उसमें ब्रेन के सेक्शंस के बारे में भी डिटेल लिखी हुई होती है. सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस फिल्म को देखें, ये क्योंकि मैंने इंटरनेट से फिल्म उठाई है तो ये एनॉनिमस है, इस पर पेशेंट की डिटेल्स उन्होंने उड़ा दी. एक्चुअली सारी पेशेंट की डिटेल्स, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या किस जगह की ली गई है, उसमें कंट्रास्ट दिया गया कि नहीं दिया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, इसके ऊपर होती है. सो जब आपने पेशेंट एग्ज़ाम में CT स्कैन देखना है तो आपने उसको ध्यान से पढ़ना है, और उसके ऊपर लिखा होगा मिस्टर XYZ एज इतना, CT स्कैन, और ये सेक्शन, उसमें कॉर्नल सेक्शन है या सैजिटल सेक्शन है वो लिखे होंगे, और एक्सपोजर की इंटेंसिटी लिखी होगी, और सेक्शंस के नंबर्स लगे होते हैं. जैसे मैंने पहली तस्वीर में लाल लाइनें दिखाई थी एक्सरे बोन से, उन एक्स लेवल्स पे वो सेक्शन कटे हुए होते हैं. डार्क हिस्सा बोन है, काला हिस्सा एयर है, और इन बिटवीन जो ग्रे एरियाज हैं वो लिक्विड है. सो अगर आप इस फिल्म में देखें तो जो वाइटिश ग्रे है वो कॉर्टेक्स है, और जो डार्किश ग्रे है वो CSF फ्लूइड है, और उसके बेसिस पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. Disadvantage in psychiatry about the CT scan is that if we have a space occupying lesion, if we have some tumor, mass, artifact, foreign body, it will be detected on the CT scan. Other than that, the CT scan is not of any use in psychiatry. So the functionality is not very much clear. Okay, so we have to make sure that whatever we want to see, it has to be very clear. Like इसमें axial CT chronic left subdural hemorrhage. So if you can see जो दरमियान वाली slide, the whitish area around is the bone, and the black area on one side is the hematoma with compression effect on in the third ventricle, so lateral ventricles. So एक साइड की वेंट्रिकल कंप्रेस्ड है और उसमें वो नजर आ रहा है. इस तरफ एक्सियल MRI है, लार्ज लेफ्ट फ्रंटो टेम्पोरल मेनिंजियोमा. नाउ दिस इज MRI, सो मैं उस पर अभी नहीं जा रहा. वो MRI फ्लेयर है, ये MRI T2 है. ये डिफरेंट लेवल्स पे इस्तेमाल होते हैं. MRI फ्लेयर कहलाता है, MRI T2 कराता है, MRI T1 कहलाता है. उसके बारे में हम ब्रीफली अभी बात करते हैं.
So जब हम इन images को देखते हैं, so हमें CT scan को देखना है कहाँ compression आ रहा है और कहाँ structural damage है. MRI में हमें वो पिक्चर क्लियर हो जाती है. सो MRI में ऊपर वाली साइड पे एक बड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है जो वाइट कलर का है, जो कंप्रेस कर रहा है. सो वो ट्यूमर मास आ रहा है और इस जगह पे जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो एनलार्ज हुई हैं ग्रॉसली, जो कि इंडिकेट कर रही है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस को. सो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखनी है. अब CT स्कैन हैज सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. One advantage is it's a short time. You just go, get an X-ray done, and you come out. It takes you hardly about 15 to 20 minutes to get the CT scan. Whereas the MRI takes about an hour, and functional MRI usually takes a couple of hours because there is a process and procedure which takes time. Second, it's more related to the soft tissue. So we can see the cerebrum, we can see the ventricles, we can see the bony details, and those are more clear. It is excellent in diagnosing extraluminal lesions, excellent in diagnosing the cause of bowel obstruction. So ये जब abdominal CT ये उसकी बात हो रही है, इसका हमारे साथ नहीं. इंडिकेशंस में जो इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं वो सारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड है. जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन. Contraindications of the CT scan are pregnancy, sensitivity to the dye which is injected to the patient, and unstable patients who are restless, agitated, or having problems like this. So we cannot go for that. Indications of the CT scan for a psychiatrist are variable. If you suspect that the person is presenting with some behavior problems that are probably secondary to some SOL, then we go for CT scan. In cases of dementia, when we want to see the extent of the atrophy, we go for the CT scan. If we see that there are some problems associated like epilepsy or seizure, then we go for CT. Other than that, unfortunately, the CT scan has no significance in psychiatry. So usually we don't go for it, right? Okay, going forward, MRI. Now this is important. MRI machines are again just same as the CT machines, but little bit different. Previously, MRI machines were closed just like this, and person was supposed to go into a tunnel-like situation. Now the MRI machines are open from the top, so people don't be phobic with it. So they are just at the base, और वो top पे as such कुछ नहीं होता. Basic principle of the MRI machine is called the process called precession. Precession is a process in which the MRI is taken up. So होता है इसमें क्या है कि पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं इस मशीन के अंदर. अब ये ऊपर से क्लोज्ड है, लेकिन एक्चुअली दोनों साइडों पे पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं. सो वो मैग्नेट जब चार्ज होता है, जब बिजली का करंट इसमें फ्लो करता है, सो इट गेट्स चार्ज्ड. And when it is charged, the magnet pulls all the hydrogen atoms in the cells to one side. वो खींच लेता है. So मैग्नेट चार्ज होगा, हाइड्रोजन एटम्स को अपनी तरफ खींच लेगा. इस प्रोसेस को प्रीसेशन बोलते हैं. और फिर वो मैग्नेट डिस्चार्ज हो जाता है और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वापस जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे. ये एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूँ. जब वो वापस जाते हैं तो वो एक रेडिएशन इमिट करते हैं जो इधर स्कैनर में पिक होती है थ्रू द कैमरास, और उसके बेसिस पे इमेज बनता है. आई होप समझ आ गई. समझ आई? So in MRI, basically what happens is that there is a magnet, there is a detector. Magnet charges, all the hydrogen atoms move, then magnet discharges, all the hydrogen molecules go back to their original position. The light emitted because of the movement of the hydrogen atoms
are picked up by the scanner and the image is formed. So इसमें MRI में the best part is कि वो जो movement of molecules है, so molecular level पे, atomic level पे images generate होते हैं, इसलिए ये precise है और psychiatry में हमारे काम आता है, ताकि हम पता चले कि डिप्रेशन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, स्किज़ोफ्रेनिया में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, OCD में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. So most of the neurobiological basis of various psychiatric mobilities are studied by the functional MRI or MRI brain, right? So I hope you are able to understand this. Now, MR signal intensities, the solid mass is bright in T2. So now there are three kinds of MRI: T2, flare and T1. T2 खास तरीका MRI करने का, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको चाहिए भी नहीं. सो आप इतना याद रखें कि T2 वेटेड जो इंटेंसिटीज हैं, T2 वेटेड इंटेंसिटीज, T2WI, वो T2WI जो है उसमें सॉलिड मास ब्राइट है, फ्लेयर में भी ब्राइट है, लेकिन T1 वेटेड जो हैं इमेजेस उनमें सॉलिड मास डार्क हो जाएगा. सेम गोज फॉर सिस्ट, T2 में ब्राइट, फ्लेयर में डार्क और T1 में डार्क. ब्लड T2 में ब्राइट, फ्लेयर में ब्राइट, T1 में ब्राइट. एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड T2 में डार्क, फ्लेयर में डार्क, T1 में ग्रे. फैट जो कि जैसे हमारा सारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो सारा ब्रेन का स्ट्रक्चर T2 में डार्क, फ्लेयर में ब्राइट और T1 में ब्राइट. Now, I totally agree that this is very confusing and you should not go into the details of it, because unfortunately when we are talking about the MRI, now this, it's not our technicality, so we are as a psychiatrist are not bothered about it, but at least we should be able to understand that the MRI is of various types: T1, T2 and flare. And if we really I'm interested in seeing the pathology, then I will go for the details of it, whether I want the T2 images, T1 images or the flare images. Only that will help me in making the diagnosis appropriately. That is important. Indications of the MRI are headache, trauma, seizure, MS, infarction, hemorrhage, hearing loss, visual disturbance, unexplained neurological symptoms or deficits, and mapping of brain functioning. Now, if you see the indications, all of our psychiatric differential diagnoses are covered with these indications. So if I am seeing a patient who complains of hearing loss and presents to me with all the symptoms of paranoia, I will definitely go for MRI and I will go for flare images, so that I'll be able to have a brain mapping functioning and also would be able to highlight what is the problem. So I'll be clear whether it is because of some structural brain damage or it is because of functionality of the brain, which comes under my domain, and should I give them psychotropics or not. This is the ideal situation for an MRI, and this is what we want. Now, contraindications of the MRI. People say that MRI is very safe, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, what are the indications, what are the contraindications. So indications of the MRI I have mentioned to you. Contraindications of the MRI: hemodynamic monitoring and temporary pacemaker devices. So if somebody is having any pacemaker device in any part of the system, Swan-Ganz catheter, which is unfortunately metallic catheter, किसी को हाइड्रोसेफलस है, शंटिंग हुई हुई है, किसी को कार्डिक पेसमेकर डला हुआ है, किसी को रीनल शंट पड़ा हुआ है, किसी के गॉल ब्लैडर में सर्जरी हुई हुई है और उसमें कोई ऐसी उन्होंने लाइगेशन की हुई जिसमें मेटालिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है. सो MRI इज नॉट पॉसिबल.
hemodynamic support devices, cardiac pacemakers, implanted cardioverter defibrillator, retained transvenous pacemakers, electronic implants or devices, for example, insulin pumps or other infusion pumps, permanent contraceptive devices or diaphragm or pessaries. So if a woman, if you take the history and ask the woman and she says that I have an IUD, which is of for a longer duration of time, which is there for probably 5 years, then I will definitely think about Teflon IUDs and I will not go for an MRI. This is important. So cochlear implants, otologic hearing devices, ear implants, neurostimulation system, and shunts. These are all contraindications. So if in an exam situation, somebody asks you the contraindications of the MRI, then you should know at least 3 or 5 of them, right? So hemodynamic monitoring systems, cardiac pacemakers, implants, electronic devices, contraceptive devices, neurostimulations, or the shunts, or any metal in the body, including the metals in the joints, like अगर उसका कोई joint replacement हुई हुई है या उसकी hip replacement हुई हुई है, then this is not a candidate for an MRI. But rest of the people can have the MRI. So that is important indications and contraindications of MRI. This is a very typical MRI, and if you see it, it mentions few things like FH25 head. So it is indicating that this is the MRI of the head. Then it indicates, where is it? FTE 5 seconds, इसमें फिर again mark किया हुआ. T1 weighted images हो, T2 हो या flare हो, वो mention होता है इसके ऊपर. I think these are the flare ones. I'm not pretty sure because the detail I haven't seen. But if you see, the bone is still white and structure underneath the bone, which is probably the liquid, the cerebrospinal fluid, is black. And in the lateral ventricles, again, they are black. So the CSF appears black and the bone appears white, and the gray matter, the solid structure, appears light grayish white, and the gray matter with the thickened structures around it are darker gray. So the color differentiation then highlights the various structures. MRI, unfortunately, in Pakistan, whatever we are having is available with just 1 Tesla images. 1 Tesla images are little bit bigger images, and they are not good images to show us the functionality of the brain. If we really want to see appropriately the clear images that are required in psychiatry, we have to go for significant higher resolution images. ये जो मैं बात करता हूँ टेस्ला की, वो मैग्नेटिक पावर है. 1 Tesla, 2 Tesla, 3 Tesla is the magnet power. The more powerful is the magnet, the more powerful catch it will be to move the hydrogen atoms, produce a precession effect, and produce the finer images. So MRI views anatomical structure, focuses. What are the differences between MRI and functional MRI? So MRI views anatomical structure, focuses on protons in hydrogen nuclei, high spatial resolution, and utilized for experimental purposes. Functional MRI views metabolic function, calculates oxygen levels, long distance resolution, and utilized for diagnostic purposes. So for me, I'll be more interested in the functional MRI in schizophrenia. So now we know that in certain type of schizophrenia, these are the findings. And if we go for functional MRI, we correlate with the normal findings and the abnormal findings in the functionality of the brain, the extent
to which this positive or negative symptoms have impact in our day-to-day life can be assessed on the basis of functional MRI. So उसमें कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो रही है, कौन से एरियाज यूटिलाइज हो रहे हैं, कितना वो फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स मुझे MRI पे मिल जाती हैं. सो इफ आई एम सीइंग a patient of schizophrenia, I will go for an MRI brain, especially the functional MRI, which is now commonly done. And if I get a functional MRI in schizophrenia, I can correlate the areas dominant in it with the symptoms of the positive or negative symptoms of schizophrenia or depressive symptoms of schizophrenia. It will be much easier for me to choose a drug and treat the patient. So that is the best part with the functional MRI. Now, these are the three pictures, और एग्जाम में इस तरह की पिक्चर्स अक्सर लगा दी जाती हैं. One is the functional MRI scan, the second one is the structural MRI scan, and the third one is the PET scan. So PET scan is the positron emission tomogram. Positron emission tomogram means isotopic. Radioisotope material is used in getting the images. So it's more sharper than the structural MRI scan, which we usually see in our clinical practice. More sharper than the functional MRI scan, which we usually don't see in our clinical practices. But the PET scan are available in Pakistan. So the PET scans can be used to see. Again, as a psychiatrist, as a clinician, my job is to correlate the areas of the brain involved, how much there is a damage, how much is the isotope intake, how much is the isotope utilization, so that I'll be able to precisely see that these are the correlations with the clinical findings for negative symptoms schizophrenia, and then I'll be able to treat the negative symptoms schizophrenia more authentically with the medications indicated for that. Even for the outcome of a clinical situation. So if my patient is not responding to the typical or atypical antipsychotics I am prescribing for treatment of the schizophrenia, I should go for a functional MRI or PET scan, and I'll be able to see why my drug is not helping him, because this is his area of the brain is involved, where these atypical antipsychotics probably won't help. I need something more than that, or some other combination or whatever. So that clinical judgment, if I correlate it with the scans, will help me in a better prognosis and outcome, which unfortunately we don't do in our clinical practice practice situations. But science is moving towards that, so we have to be very clear about it. Now, this is a PET machine. It's again same. So Shaukat Khan में लाहौर में PET scan machine लगी हुई है. I think Khan में भी शायद PET machine hai. I'm not sure, but I think it's there. So the PET machine is the positron emission tomographic machine. This is the machine. It works on the same principles. Like, the only difference is that the radioisotope is injected. That radioisotopes again disintegrates in the system when there is some metabolic process happening, and that annihilation process is picked up by the SPECT scanner, and then the image is constructed. It's more refined, more formed. So अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट कर दूँ और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दूँ, तो वो जितनी देर में रेडियो आइसोटोप डिके करेगा, वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा उस सारे जगह की ट्रेसिंग मुझे पेट स्कैन से पिकअप हो जाएगी. सो यू कैन isotope the oxygen, which is most commonly used. Then you can isotope the hydrogen molecule, or
there is another 2 or 3 chemicals. So there are various kind of isotopes available. So this scan machine is dependent on the isotopes. And if the isotopes which are required in the brain scans are not available, like in Shoghathan, they are more interested in the cancer treatment. So then it will be of no use. So we have to have a very specific radioisotope which is utilized in the brain. Only then we'll be able to see appropriately the scanning process. So what is PET? PET is a non-invasive diagnostic imaging technique for measuring functional activity of the cells in the human body. It was the first scanning method to give functional information about the brain. It measures metabolic activity, physiology, and pathology of the human body. It works with the positron, and tracer is entered in the body. Now, this is what the difference is. In functional MRI, I don't need a radioisotope. But in PET scan, I definitely need a radioisotope. So if I have an access to radioisotope, I will go for a PET scan. But if I don't have an access to the radioisotopes, I will prefer the functional MRI. PET scan indications. Now, if you are able to look at these indications, they are very significant. Thyroglobulin positive with unknown tumor location. High risk patients given the extent of the disease, including those with known metastatic disease who may have additional metastasis. To determine long-term prognosis, post-treatment response assessment, Hurthal cell, I don't know how do you pronounce this word, carcinoma evaluation, selection of patients with aggressive distant metastasis for experimental therapies. Weaker indication, low risk patient, known metastasis, lesional dosimetry, evaluation of the thyroid nodule, evaluation of the thyroid nodule, non-inclusive FNA cytology, etc. Basic indication is 1. Diagnostic. 2. Precise evaluation of the brain parts of the system involved. 3. Comparing them with the normal functioning and abnormal functioning, and we are good to go. So this is important for us. Now, what do we expect before we go for a PET scan? So it's a complicated process. So 24 hours before the test, low carbohydrate, no sugar diet, no strenuous exercises. 6 hours before the test, no eating. Blood sample taken to check the glucose level. IV delivers radioactive tracers, and wait 60 minutes for the tracers to circulate into the body. Then you go for a scan. So it's a process of about 4 or 5 hours for the PET scan. It's a difficult procedure. Like I mentioned you earlier, that for CT scan, we just need a scan for maybe for 15-20 minutes. But for PET, we have to go for it. This picture is in your bank, FCPS bank, because I placed it there about 8 years ago. And people were confused, but honestly speaking, there is no confusion at all. All you have to do is to be bit cautious. सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर इम्तिहान में, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई कॉम्प्लिकेशंस थी. जो थोड़े से समझदार लोग थे उन्होंने इसको पिक कर लिया. एक तरफ नॉर्मल कंट्रोल लिखा हुआ, उसमें ब्लू और येलो पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं. दूसरी तरफ ओसीडी का मरीज है और उसमें रेड इमेजेस थोड़े और येलो बढ़ गए. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, ओसीडी में क्या होता है, इन ओसीडी देयर इज हाइपर अगेन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स. तो ऊपर जो रेड और येलो एरिया वो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में थोड़ी चीज़ें एनहांस हो गई हैं. ओसीडी में ये फाइंडिंग होती है. नॉर्मल से हम एक शख्स की जिसमें ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में मेटाबॉलिज्म हाई है उसको देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं और हम कहते हैं जी ये ओसीडी. जैसे जैसे मैं दवाई दूंगा ये हाइपर फ्रंटैलिटी या ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती जाएगी,
प्रोग्नोसिस और आउटकम मेरे लिए क्लियर हो जाएगा। अगेन ये आप देखें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, इसमें सब मेंशन किया हुआ है। नॉर्मल स्कैन तस्वीर है, डिप्रेशन की ब्रेन स्कैन की तस्वीर है। अब नॉर्मल में और डिप्रेशन में फर्क देखें, ब्लू कलर का क्लियरली नजर आ रहा है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके हम बाद में डिटेल्स देखते हैं। सिमिलरली बाइपोलर ब्रेन स्कैन है, उसमें फाइंडिंग्स है। स्किज़ोफ्रेनिया का ब्रेन स्कैन है, इसमें पहले वाले इमेज में और स्किज़ोफ्रेनिया में कंपैरिजन देखिए। ओसीडी ब्रेन फंक्शन है, उसमें उसमें सब में डिफरेंट है। डिप्रेशन, बाइपोलर, schizophrenia, OCD. And this is demarcating the pathogenesis, the problem, and hopefully we'll be able to treat and appropriately assess them. Last of the scans is the SPECT scan. Now, this is again a complicated machine. What to expect during a PET scan? Again, because we don't do for a PET scan, मेरा नहीं ख्याल कि इन नियर फ्यूचर भी पैट स्कैन शायद स्पेक्ट स्कैन पाकिस्तान में लगेगा। व्हाट अ स्पेक्ट स्टैंड फॉर? सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राम। Single photon emission computerized tomogram. So it is a CT scan. It is just like the CT scan, but it has radioisotopes into it. Single photon emission, right? So we need radioisotopes again for SPECT scans. This is different than PET, but it is similar in the principles of CT scan and the PET, right? So उसमें भी radioisotopes हो रही हैं, इसमें भी हो रही हैं, लेकिन वो MRI के फंक्शनल पे काम कर रहा है, ये CT स्कैन के फंक्शंस पे काम कर रहा है। Contraindications: pregnancy, food within 4 hours, caffeine intake, bronchospasm, hypotension, xanthine containing drugs. Now, SPECT and PET का डिफरेंस है, राइट? और इन दोनों में फर्क टाइम का है, इक्विपमेंट का है, बट रेडियो आइसोटोप्स प्रॉब्ली सेम है। लुई बॉडी डिमेंशिया में जो चेंजेस आ रही हैं पेट में और स्पेक्ट में, वो इसमें डिमार्केट की गई। आई डोंट थिंक सो इन एग्जाम सिचुएशन दे कैन ask you to see the image of the SPECT scan because it's not available. So they probably won't go for it, but the PET is available, PET scan, so उसकी image के ऊपर बात हो सकती है। So इसीलिए मैंने आपको PET के 5 images, बाइपोलर के, डिप्रेशन के, स्किज़ोफ्रेनिया के, OCD के दिखा दिए, और ये डिमेंशिया का PET स्कैन का भी इमेज आप देख लें। So थोड़ा सा आपको याद रखना है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में और डिप्रेशन में स्पेक्ट स्कैन में क्या डिफरेंस इमेजेस आ रहे हैं, वो इधर डायग्राम में दिखाए गए। सो डिमेंशिया में पर्पल और वाइटिश का डिफरेंस, स्ट्रक्चर सुकड़ा हुआ है। डिप्रेशन में कम सुकड़ा हुआ डिप्रेशन में भी है। ग्रीनिश खाली स्पेसेस ज़्यादा हैं, इसमें बड़े स्मूथ कंटूर्स हैं। इस तरफ जो इमेज है बाकी अपर लोब्स का, टेम्पोरल लोब्स का, प्राइटल लोब्स का, उसका फर्क, और इसकी यहाँ पे डिप्रेशन में स्मूथनेस। सो डिमेंशिया में डीजेनरेटिव इश्यूज की वजह से पैची है और इसमें स्मूथ है। दैट इज द डिफरेंस, राइट? ओके, सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इट टू मी. So I just covered the CT, the MRI, the PET, and the SPECT scans, which can be asked on the basis of their presentations in the exam, their utilization, their indications, their contraindications, and why we should go for it. Any question? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ। Thank you very much. Happy New Year. This was the first day. Happy New Year, sir. I never wanted to utilize, waste my New Year's first day without teaching. So I thought myself that it will be good for me that the first day of the new year, I should teach people the kind of the job which is probably my responsibility. So I wish and I hope that all of you will do some New Year resolutions.
वो अभी सुबह ही बात हो रही थी मानूर से थे, and I was talking about it that in